Hey दोस्तों, welcome back again to this channel. Today I'm back with the powers of income tax authorities. तो आज हम जानेंगे क्या क्या पावर्स होते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज का along with sections. तो लगे रहिए वीडियो के अंत तक. So the income tax authority has the classes of authority under section 116 of the Income Tax Act 1961. So these authorities were placed according to its powers, which I'll discuss in the next video. So the first power of income tax authorities were powers relating to discover production of evidence etc. The assessing officer जो कि है Deputy Commissioner on Appeals, Joint Commissioner, Commissioner on Appeals, Principal Chief Commissioner and the Dispute Resolution Panel have the powers while trying a suit under Code of Civil Procedure जो कि है Discovery and Inspection, attendance of any person, any officer of banking company and examining such person on oath, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इशूइंग कमीशंस. तो इस तरह ये अथॉरिटी किसी भी इंसान को बुला सकती है जब भी केस चले. नाउ द सेकंड पावर इज द पावर ऑफ सर्च एंड सीजर जो कि सेक्शन 132 डील करता है. ये पावर यूज किया जाता है डायरेक्टर जनरल या फिर डायरेक्टर या फिर चीफ कमिश्नर या एडिशनल डायरेक्टर और एडिशनल चीफ कमिश्नर और जॉइंट डायरेक्टर या फिर जॉइंट कमिश्नर के द्वारा. As we can see, today it is not anymore hidden from income tax authorities that people can evade tax and keep unaccounted assets. Whenever the department or the prosecution fails to prevent to tax evasion, the department has the power to take actions like search and seizure. Under the sections, wide powers of search and seizure are conferred on the income tax authorities. And the authorities also has the power to requisition of books of accounts under section 132A. यहाँ अगर किसी भी अथॉरिटीज को लगता है कंसिक्वेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इन हिज पोजीशन, लगता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या फिर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स है यूजफुल या फिर रिलेवेंट है किसी भी प्रोसीडिंग के साथ अंडर द एक्ट, तो ये सारे एसेट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब रेफर किया जाता है रिक्विजिशनिंग ऑफिसर के पास. सेक्शन 132B कहते हैं कि मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द एसेट्स सीज्ड. कोई भी एसेट्स जो कि सीज्ड किया गया है इनकम टैक्स के द्वारा कैन बी अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट ऑल टैक्स लायबिलिटीज ऑफ द एसएससी. कि एसएससी को ये एक्सप्लेन करना होगा सेटिस्फैक्टरीली कि कैसे वे सीज्ड एसेट्स को एक्वायर किया. देन सच एसेट्स are required to be released within a period of 120 days from the date on which the last search is executed under section 132. तो इसके लिए एसएससी को एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर के पास within a period of 30 days in which the assets were seized. Next power है power to call for information. Under section 133 of the Income Tax Act 1961, information can be gathered from a person which is considered to be useful for or relevant to any inquiry or in connection with any pending proceeding by the assessing officer. Now, when an information is collected in respect of any inquiry, in any case जहाँ proceeding pending है वहाँ पर ये power exercise नहीं कर पाएंगे income tax officers के द्वारा जो कि below the rank of director and commissioner. अगर the subordinate officers ये power को हाथ में लेते हैं तभी भी without the approval of director and commissioner they can't do. Next point है power to inspect registers of companies under section 134. The assessing officer, the deputy commissioner of appeals, the joint commissioner or the commissioner appeals or any person subordinate to him authorized in writing in this behalf by the assessing officer may inspect if necessary, take copies or copies to be taken of any registers of members, debenture holders or mortgages of any company. Next point है power to make inquiry under section 135. The principal director general of income tax or the principal chief commissioner or the principal director or the principal commissioner or director general या फिर डायरेक्टर या फिर चीफ कमिश्नर या फिर कमिश्नर और द जॉइंट कमिश्नर विल बी कॉम्पिटेंट टू मेक एनी इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट. जितना भी अथॉरिटीज है वे लोगों के पास पावर होता है इंक्वायरी करने का. सो आज के लिए इतना ही. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद न्यू टॉपिक. दिस इज चैनल्स होस्ट साइनिंग ऑफ. थैंक यू.